Hello everyone, I am Apurva. Welcome to Legal Buddy. And before I start, I would like to do a request. Please like, share, and comment because we need your like, we need your comments, and if you have any doubt, you can comment below. And with that note, let's start. In this video, I will be talking about criminology. With criminology, I will be discussing what is criminology, what are the nature and scope of criminology, then what are the interrelations between criminology, penology, and criminal law. Then I will talk about significance of criminology. Then I will talk about objective of criminology. Then I will talk about Indian concept regarding criminology. Then I will go to radical criminology, and at last I will discuss neo-criminology. So with that note, let's start. And for the start, I will go with criminology. So criminology, a word. This word is made from two words. One is Latin, the other is Greek. First is crimine and the other is logia. Etymologically, if you explain it, you will find out it's a scientific study about nature, extent, cause and control of criminal behavior. So समझाने के लिए मैं समझाना चाहूँगी कि क्रिमिनोलॉजिया जो बेसिकली एक साइंटिफिक स्टडी है नेचर, एक्सटेंट और कॉज कंट्रोल ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में. देन फर्दर हम कॉलमैन एंड नॉरिस का व्यू पढ़ते हैं जिसमें कि एनालिसिस है अबाउट नेचर ऑफ क्राइम, जो कि कहते हैं क्रिमिनोलॉजी इज़ अ एनालिसिस ऑफ नेचर ऑफ क्राइम, परपिट्रेटर्स ऑफ क्राइम, कॉज ऑफ क्राइम, then formulation of criminal law, law enforcement and way that crime can be controlled. इस चीज़ों का, इन फैक्टर्स का एनालिसिस होता है क्रिमिनोलॉजी में. एंड फॉर दैट एनालिसिस इट इंक्लूड्स साइंटिफिक एनालिसिस and observation of crime and criminals. By that we can analyze all these, that is nature of crime, cause of crime, formulation of criminal law, law enforcement and ways that can be used to control crime. So, then there is Sutherland view. उनका कहना है कि it's basically a body of knowledge regarding delinquency and crime as a social phenomena. So ये एक body of knowledge है regarding basic delinquency के बारे में या फिर जो social phenomena है crime का उसके बारे में. इसमें include करता है law making, law breaking and the reaction towards that law breaking. Basically criminology का जो main motive है, objective है, it is to develop a body of general verified principles. Such a body of general verified principle या किसी भी other type का knowledge that is can be used for the process of making law of crime or for making laws for the reaction against the crime. ठीक है, to create a reaction against the crime. तो इसके लिए क्रिमिनोलॉजी क्रिमिनोलॉजी ऐसे प्रिंसिपल्स को और ऐसे नॉलेज को डिवाइस करता है, उसका ये ऑब्जेक्टिव है. नाउ वी विल टॉक अबाउट क्रिमिनोलॉजी, उसका नेचर एंड स्कोप. सो देयर आर प्राइमरली व्हेन वी टॉक अबाउट देयर आर टू काइंड ऑफ क्रिमिनोलॉजी. फर्स्ट इज थियोरेटिकल और यू कैन कॉल इट प्योर क्रिमिनोलॉजी. देन द अदर वन इज अप्लाइड और यू कैन कॉल इट प्रैक्टिकल क्रिमिनोलॉजी. In theoretical criminology, that is pure criminology, we have the view of Professor W.A. Bongar, who studied this theoretical criminology in 5 heads. Those 5 heads are criminal anthropology, criminal sociology, criminal psychology, and criminal psychoneuropathology. And at last, we will talk about penology under theoretical criminology. So, we'll start with theoretical criminology, and in theoretical criminology, the first head we study is criminal anthropology. Basically, criminal anthropology focuses towards the physical appearance of an offender. By the view of Kaiser Lombroso, he has the view that the criminal behavior he talks about the criminal behavior in terms of physical characteristics of offender. He usually says that criminal offenders are different from normal people. They possess inferior physical characteristics.
सो दैट इज़ हाउ यू कैन फाइंड आउट इज़ अ क्रिमिनल। जैसे आप ये समझ लो कि 4 लोग खड़े हैं और किसी ने अजीब सा हेयर कट कटा रखा है और हाथ में बैंड वैंड पहन रखे हैं और गले में और उल्टी सीधी चेन में पहन रखी है, अजीब सी फैंकी शर्ट पहन रखी है, यू विल और कोई बेकार सा चश्मा लगा रखा है। इन उस सभी लोगों में आप उन्हें पॉइंट आउट करोगे, ही विल बी लुकिंग डिफरेंट, तो आप उन्हें पॉइंट आउट करोगे दैट कि हाँ इसकी क्रिमिनल मेंटालिटी है। दैट दो फिजिकल अपीयरेंस किसी भी बंदे का, उस पर इनका मानना था कि उस पर डिपेंड करता है क्रिमिनल मेंटालिटी किसी भी, मतलब अगर किसी ऑफेंडर को पहचानना है वी नीड टू सी हिज फिजिकल अपीयरेंस। जैसे कोई बड़ा तगड़ा आदमी है, मुंह पे कट है और कई जगह कट्स हैं और बिल्कुल तगड़ा सा आदमी है, डरावना सा दिखता है, ये भी लाइक नहीं 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 खतरनाक आदमी से दूर हो, हाँ ये क्रिमिनल मेंटालिटी का है, हाँ इससे खतरा है, हाँ ये एक थप्पड़ मार देगा तो मर ही जाएंगे हम, मारता भी होगा ये। तो ऐसे तरह की जो इस मेंटालिटी को वो फोकस करते हैं। देन फर्दर वी विल टॉक अबाउट क्रिमिनल सोशियोलॉजी। इसमें हम बेसिकली सदरलैंड का व्यू देखते हैं। सदरलैंड में एक थ्योरी दी थी इसमें डिफरेंशियल एसोसिएशन की, ठीक है। इसमें हम क्रिमिनल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं बाय लर्निंग देम, और हम लर्न कैसे करते हैं, अपने आप को एसोसिएट करके फ्रॉम द क्रिमिनल्स with the criminals. So we associate ourselves with the criminals and then we learn about their criminal behavior, understand them. So that is how the referential association is, and that is how the theory of Sutherland and this criminal sociology is. Now हम criminal psychology की बात करेंगे. Basically it's the emotional aspect of human nature that we focus in criminal psychology. Then we will see criminal psychoneuropathology. Criminal psychoneuropathology में basically they attribute criminality to